charged in multiple states against the same set of people with similar charges that include conspiracy, abetment to violence, creating communal harmony, and of course, sedition. There is a larger purpose at work when this happens. That is why this must be fought. By raising our collective voice, by representing to those in power to recognize the absurdity of what has been recorded at police stations, and by challenging police action in courts. I hope the courts will not say that the process of investigation should be allowed to continue, because, as happens so often in our country, the process is itself the punishment. And that may well be the intention. Is there a pattern? I don't want to go into a long history of cases, Anand, and misleading rumors, unquote, about COVID vaccines. The provocation for such a letter was unclear, since vaccination has been proceeding more smoothly and in larger numbers in India than in most other countries. The Home Secretary also said that the concerned authorities had certified the vaccines. But the whole point of free expression is that one has a right to question what the authorities say. As it happens, it is virologists and other medical specialists who ask the questions. It is Germany that has made comments about the efficacy of one of the vaccines certified in India. Will the IPC be invoked against them too, or only against journalists? Finally, we have to face the question, what kind of journalism must we practice in times like these? And I can't do better than quote Lionel Barber, who was until I think last year the editor of the Financial Times, who has the following to say, and I quote, "The internet not only destroyed traditional claims of pure journalistic objectivity, it eroded the notion of, quote, the trusted source, unquote, whether it be the respected TV anchor or, again, quote, unquote, the newspaper of record. The internet also lifted barriers to distribution and entry, leading to an explosion of news and views. Everything accelerated with the internet rewarding speed and controversy. In the middle of this revolution, it was tempting to scrap journalistic traditions and practice. Demanding multiple sources and striving for fairness and balance seemed quaint to many when watching the growing influence of unrestrained forms of expression such as blogs. But I remained faithful to the proposition, and still do today. Many of the old rules should apply to new media, even if the journalistic form has changed and the surrounding political debate has become infinitely more intense." End quote. When we are under attack, the position that Barber spells out for the way we must do our job has compelling logic. Thank you. Thank you. I think many of us sitting here and who have been in the profession for the past 30... Can we sit there? Can we sit there? Thank you. Sorry. Yes. I think many of us, like I said, who've been here and we've been together in the field of journalism for the past 30, 40 years, never thought that we would be sitting at a time when we are going to face what journalists have been facing for the past 1 year in particular, and before that as well. The law of sedition, which of course should have been abolished a long while ago, has been used recklessly to intimidate and harass journalists doing their job. All of us who have been in the field, who have covered conflict, who have traveled, who have been on the road, and not just in the studios, know that it is possible
to make errors, though in this case I don't think there was an error maybe. But to report when you're relying on eyewitnesses and you're reporting violence, and you're reporting maybe it could be the civil war in Assam in the 80s, it could be the violence against Sikhs in Delhi in the 80s, it could be communal carnage in UP and Bihar, casteist carnage. You know that in the field you are relying on eyewitness accounts. Now with television and a mic, you rush to report, you retract. You can make a mistake, you might not make a mistake, but then to be faced with sedition, to be told that you can be arrested any moment and locked away without a hearing. This is only being done to intimidate, harass, victimize the journalists against whom these cases are being filed, but also to terrorize the professionals as well, to make you think twice, to make you afraid of doing your job, to be worried every time you write, to be looking over your shoulder, and for then, of course, the editors and the proprietors and those who control the news to be very reluctant in reporting the news as it is and to bring truth to power. And this is the entire reason for what we are seeing. A Facebook post gets 3 journalists charged in the Northeast. A tweet here and there, you get sedition charges against you. And it is a constant, it is almost constant, that somehow the message is shut up. Stop writing. Stop bringing truth to power. Stop being a watchdog of democracy. Stop speaking for the poor and the victimized. Speak for the powers. Speak for government. Speak for the establishment. Speak for us. But don't speak for the toiling masses of this country. I think this is really the message that is coming out. We are so glad that so many journalists still believe in the profession and know that for democracy to survive, the 4th pillar of democracy also has to be vibrant, has to be passionate and courageous, it has to be irreverent, it has to be honest. And this is what we hope we will all strive together to do. Thank you. Okay, Mr. Pandey, Comrade S.K. Pandey of the Delhi Union of Journalists. Friends, I've not come here to make any detailed speech. I've come here to express solidarity in a protest meeting against what is being done to journalists in various names, in the name of sedition, in the name of anti-national, in the name of this, that, you name it. In the humble opinion of many of us, what is happening today is a situation which is an undeclared emergency. People have seen what the emergency was. We are heading for something more than an undeclared emergency where you raise your voice against the powers that are, and you'll be targeted, whether it be sedition, whether it be filing of FIRs in 101 areas so that you lose the desire to fight or you're compelled to call it a day, and to crush all genuine democratic movements that are taking place. Slightly getting aside from the main topic today, I think from journalists to farmers to trade unionists to artists, writers, intellectuals, all of them
are facing a virtual, actually it is a lockout for medical reasons, but actually it is a lockdown of the mouth. We are heading towards it. Reminded of the words of Faiz Ahmad Faiz, speak when your lips are speak. I am reminded of the time when Nobel laureates like Gabriel Garcia Marquez, who himself was a journalist, had to say that this is heading to be. He said in the index of press censorship that this is heading to be one of the best professions in the world. And we are coming in the last 5-6 years to a situation where the best profession in the world, as he called it, is becoming perhaps the worst, the most dangerous, the most hazardous, and the most tom-tomming, government tom-tomming, and all forms of tom-tomming other than pure journalist writing, where fake news and everything is taking over, and many things taking over at the behest of the government. I welcome this meeting for the reason that it is an attempt to unite. I think there has to be unity in all fronts. I disagree on many things, but just as in the Bihar press bill in another times, there has to be unity and more unity, but not with vested interests, not with interests who will sabotage movements, to make movements fizzle into nothingness and to prevent change for the better. Today is a very good day to make a humble beginning for journalists, at least on the 73rd anniversary, that anniversary of the father of the nation, as Sanjay had been. I really would not like to come between you and the other speakers, but I think there has to be unity among ourselves on the issues of freedom of the press, also in issues of trade union rights. Sometimes freedom of the press becomes freedom of the purse, and to prevent governments from ending the profession. It is already almost ended. The journalism we dreamt of is being killed. It is time to us to unite and save it, and to save our workers in the profession. So thank you. Thank you, Pandit. I'll ask Sri Jaishankar Gupta. Jaishankar Gupta Association. Mic बीच में लगी। चलो एक धन्यवाद आनंद जी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हम जमा हुए हैं। सरकार के उन कारनामों का विरोध करने के लिए जो इस देश में बची खुची प्रेस की स्वतंत्रता है, उसका गला घोंटने में लगी हुई है। गांधी से हमको प्रेरणा मिलती है सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए। सामने कितना भी ताकतवर हो, उससे हमको लड़ना होगा। साथियों, ये जो 6 पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन के मामले दर्ज हुए हैं, हमारा कहना है कि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने के अवसर होते हैं। अगर नहीं होता है तो उससे निपटने के लिए आपके पास कानून होते हैं, आपके पास फोरम्स होते हैं। आप उन फोरम्स पे जा सकते हैं,
उन कानूनों की मदद ले सकते हैं। लेकिन सेडिशन का मामला आज वो लोग लगा रहे हैं जो लगातार झूठ की खेती करते रहे, जिन्होंने इस देश में बोफोर्स के खिलाफ झूठा माहौल बनाया था, जिन्होंने लगातार झूठ पर झूठ बुलवाया, अफवाहें फैलाई। आज उन लोगों की खबर कौन लेने वाला है जो कठुआ और हाथरस के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती है। रोज आप लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो जो भाव भाव करने वाले लोग हैं ना, उनके खिलाफ भी अगर सेडिशन का मामला लगेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों कि इस मामले को आप अलग अलग करके मत देखिएगा। ये लगातार सुनियोजित कोशिश हो रही है कि प्रेस की अभिव्यक्ति पे कैसे हमले होंगे, असहमति के स्वरों को कैसे दबाया जाएगा। ये एक घटना नहीं है, इसके पहले लगातार सीरीज हम लोग यही कई बैठ के कर चुके हैं। आज आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि वहां पत्रकार नहीं आ सकते। अगर उनको आना होगा तो पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के आना होगा कि किस अफसर के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कोविड के नाम पे, कोरोना के नाम पर पत्रकारों का पार्लियामेंट में घुसना बैन कर दिया है। बहुत कम लोगों को पासेज दिए जा रहे हैं। जिनके पास परमानेंट पासेज है, जिनके पास LND का पासेज है, उनको आप अंदर जाने ही नहीं देंगे। आप जब रैलियां करेंगे, नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, उसमें जब हजारों की भीड़ जमा करेंगे तो उस समय आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट जो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पर अगर कोई पत्रकार चला जाएगा तो वहां कोरोना का खतरा पैदा हो जाएगा। साहब कैसी बातें करते हो आप तो आपके मुंह से, जबान से सोते जागते आपातकाल 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 की याद आती है। लेकिन आज जो हो रहा है ये तो आपातकाल का बाप है। आपातकाल घोषित नहीं है। आपातकाल में हमको मालूम था कि क्या सेंसर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आज तो हम कहां कुछ बोल रहे हैं। वो सेडिशन का मामला बन सकता है, गिरफ्तारी का मामला बन सकता है, देशद्रोही तो हमको करार दे ही देंगे आप, क्योंकि सर्टिफिकेट आप ही के पास देशभक्ति का है। क्योंकि जब गांधी लड़ रहे थे, सुभाष लड़ रहे थे, तो आपके लोग दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे, माफी मांगते थे। इमरजेंसी में जब जयशंकर गुप्ता जेल में होते थे तो आप माफी मांगते थे, इमरजेंसी में माफी मांगते थे। माफ कीजिएगा, हम माफी मांगने वालों से नहीं, हम लड़ेंगे, आपके खिलाफ लड़ेंगे। अगर आपके काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर आज राजदीप सरदेसाई का मामला है, मृणाल पांडे का मामला है, अमरनाथ या परेश नाथ का मामला है, या हमारे साथियों का मामला है, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम माफी वीर नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। बस एक ही बात कहना है साथियों कि हमारी ताकत, हमारी एकजुटता होगी। अगर हम एक रहेंगे, और इस एकजुटता में सिर्फ पत्रकार नहीं, संजय हेगड़े हैं यहाँ, मैं इनका स्वागत करता हूँ, ऐसे वकीलों का स्वागत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। आपातकाल का ये नाम लें या ना लें, लेकिन आने वाले दिन खतरनाक होंगे। जिस तरह से जरा भी असहमति व्यक्त करने पे, जरा सा सवाल खड़ा करने पे नौकरियां निकाल दी जाती हैं, नौकरियों से बाहर करवा दिया जाता है। किया नहीं जाता, करवा दिया जाता है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं, काले कानूनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि वकीलों के साथ भी, बुद्धिजीवियों के साथ भी, युवाओं के साथ भी पत्रकारों की एक एकजुटता बननी चाहिए, ताकि कभी कोई बात हो तो आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकार लड़ नहीं सकते हैं, उस ढंग से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई को संजय हेगड़े जैसे लोग या और भारी हमारे जो वकील लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश में जमहूरियत की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहने की जरूरत है, अगर वो सोचते हैं, ऐसे तमाम सोचने वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं अपने उन मित्रों के साथ
जो लगातार भक्ति राग गा रहे हैं, जो पत्रकारिता के चारण काल का ढोलक बजा रहे हैं। रघुवीर सहाय ने एक बार कहा था, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। माफ कीजिएगा, आप वहां बैठ करके जो आप दलाली कर रहे हो, जो भाव भाव कर रहे हो, आने वाले दिन आपके लिए भी उतना ही खतरनाक होंगे, क्योंकि आपके नाक से मुंह से भी अगर छींक निकल जाएगी ना, तो जो फासिस्ट है उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये याद रखना, क्योंकि 90% मामलों में आप भक्ति करोगे, कहीं किसी बात पे कहीं निकल गया, घर परिवार में अपने दोस्तों के बीच में भी बोल रहे होगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे, कहीं से बात पहुंच जाएगी तो आप भी सेडिशन के आरोप में ही जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में प्रेस एसोसिएशन पूरी तरह से साथ है। प्रेस क्लब, IWPC, IJU, DUJ, तमाम जन संगठन जितने भी यूनियंस हैं, उन सब मिलकर के हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ेगी मोदी जी, अमित शाह जी, तो हम तिहाड़ का रास्ता भी देखने वाले हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं विनीता जी से अनुरोध करूंगा कुछ बोलें। विनीता पांडे, इंडियन वुमेन्स प्रेस को। थैंक यू आनंद। हम आज ही नहीं, अक्सर ऐसे मौक़ों पे ही मिल रहे हैं जब हमारे अपने साथी या तो किसी स्टोरी करने के लिए अरेस्ट किए जाते हैं या ट्वीट करने के लिए अरेस्ट किए जाते हैं, और ये लगातार हो रहा है। हमारे पत्रकार साथी कोई इवेंट कवर करते समय उनके साथ ज़्यादती होती है, कभी पुलिस के डंडे भी उन्हें दिए मारे जाते हैं, कहीं उन पे कोई स्टोरी करने पे उन पे झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं। सरकारों के साथ पत्रकारों की कभी मित्रता नहीं होती है। हम उनको आईना दिखाते हैं। अगर कोई पत्रकार किसी पॉलिटिशियन का मित्र है या किसी सरकार के बहुत करीब है, तो ये उसके पर्सनली उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग निंदक होते हैं, हम लोग आपके आलोचक होते हैं, और हमारा काम आपको आईना दिखाना होता है। आपकी तारीफें करने के लिए हम पत्रकारिता करने नहीं आए। इस काम करने के लिए तो और बहुत सारे प्रोफेशंस थे, जिसे छोड़ के बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशन चुना है। मैं CPG का डाटा देख रही थी। इजिप्ट, टर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया, यहाँ सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टों को जेल की जाती है, और मुझे लगता है कि अब भारत उस लिस्ट में बहुत जल्दी शामिल हो जाए। जिस तरह से UAPA और सेडिशन चार्जेस हमारे पत्रकारों पर लग रहा है, ये सेडिशन का तो महत्व ही खत्म कर दिया है। मतलब उसको तो वैसे भी निरस्त कर देना चाहिए उस कानून को, पर इतना बड़ा जो सेडिशन का जो चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज है, अगर वो एक छोटे से ट्वीट से या किसी आर्टिकल से अगर इस पर लगाया जा सकता है, तो इस पूरी मतलब आप पूरी जस्टिस सिस्टम का मौकरी उड़ाते हैं, आप पूरे कानून को मिसयूज़ करते हैं। और सरकार जब कानून का मिसयूज़ करती है तो ये उसे शोभा नहीं देती। लोग अगर मिसयूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रावधान होते हैं, पर अगर खुद सरकार के लोग ही उन कानूनों को और जो लगाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, मुझे लगता है कि IPC उन्हें भी पढ़ाया जाता है, उन्हें भी पूरा CRPC पढ़ाया जाता है कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। आप एक FIR कराने जाइए तो आपको अच्छे से कानून पढ़ा देंगे कि ये नहीं लगेगा, लेकिन जर्नलिस्टों पे आजकल के दौर में तुरंत कोई ना कोई सेक्शन ठोकने में 1 मिनट नहीं लगता। तो क्या अगर एक ट्वीट होता है या कोई आर्टिकल लिखते हैं और कोई क्रिटिसिज्म होता है, तो क्या आप उस पर सेडिशन चार्ज लगाएंगे? आप सरकार के पास ही अपने फोरम्स हैं, आप प्रेस एसोसिएशन में जाइए, आप प्रेस काउंसिल में जाइए, आप जर्नलिस्ट की शिकायत करिए, आपके पास 1000 प्रावधान है, पर इस पे तो कोई भी सड़क का आदमी आएगा, कोई भी कंप्लेन कर देगा और आप सेडिशन जैसा चार्ज लगा देंगे। मतलब ये तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे कानून के नुमाइंदों पे जो ऐसे चार्जेस लगाते हैं। मतलब ये लगातार ही हम पैटर्न देख रहे हैं कि आप मैं कल एक फिल्म देख रही थी, ट्रायल ऑफ शिकागो 7, उसमें था वी वर द चोजन वन। मतलब आपने आइडेंटिफाई कर रखा था कि इन लोगों को पहले मौके में ही हम कुछ गलती करें और हम इन्हें टांग दें। मृणाल पांडे, राजदीप, ये सब पद्मश्री अवार्ड विनर्स हैं जिनका सरकारों ने सम्मान किया है। मतलब आपको सोचना भी चाहिए कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं ऐसे लोगों को। इंस्टीट्यूट्स ऑफ जर्नलिज्म है लोग, कुछ भी है आप, मतलब अगर हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा का पुल नहीं बांध रहे हैं, तो हम आपके लिए बुरे हैं। ठीक है, हम बुरे हैं, लेकिन आप हम पे सेडिशन लगा देंगे। ये तो थोड़ा खुद की सोचने की बात है कि आज सरकार को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि यूपी में किसी बच्चे पे किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे। उन 2 पत्रकारों पे आप इतने सीरियस UAPA लगा देते।
मतलब मजाक बना दिया आपने, तो पूरे लॉ सिस्टम का ही मजाक बना दिया। और किस तरह से कोर्ट्स इनको अलाउ करते हैं कि आप किन सर्कमस्टेंसेस में सेडिशन चार्जेस लगाएं, वो एक मुझे लगता है एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ क्या लगा सकते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं कि वो प्रेस काउंसिल में जाए और आप किसी भी पत्रकार की शिकायत करें, इसीलिए वो मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं। मैं अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रही थी और मुझे मालूम नहीं है किसका लिखा है। खास तो है हर कोई यहाँ पर, सारे तो असरदार नहीं, दिमाग तो है हर किसी के पास पर सारे तो समझदार नहीं, बेशक गुस्ताख है कुछ दिल यहाँ पर सारे तो गुनाहगार नहीं। Sinha of the Indian Journalist Union. थैंक यू आनंद जी। दोस्तों, मुझे आज यहाँ खड़े होके ये कहने में बड़ा अजीब लगता है कि क्या हम डेमोक्रेसी में हैं। हम अपने को विश्व का बहुत बड़ा, वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, बट क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेडिशन चार्जेस पत्रकारों पे लगे तो क्या वो डेमोक्रेसी रहेगी? क्या हम उस डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं अपने में? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डिक्लेयर कर दीजिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वी डोंट वांट डेमोक्रेसी एट ऑल। उसके बाद आप सेडिशन लगाइए, अब बंद कर दीजिए जर्नलिज्म। दुर्भाग्य यही है आज कि सेडिशन जैसे कानून जो कि ब्रिटिश समय में लगाए जाते थे, आज पत्रकारों के खिलाफ, जर्नलिस्टों के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह लग रहे हैं। छोटे से ट्वीट पे आपने सेडिशन लगाया। इसके पहले यदि आप देखें कि हिमाचल में कोरोना का मैनेजमेंट जो खराब था, वहां की सरकार का, यदि जर्नलिस्टों ने उस पर स्टोरी की, वहां भी सेडिशन लगा 6 जर्नलिस्टों के खिलाफ, उनको अरेस्ट भी किया गया। अभी विनीता जी ने कहा जो यूपी में कानपुर में जो हुआ, और उसमें ये मान रहे हैं कि वो स्टोरी सही है। बच्चे बिना गर्म कपड़ों के योगा कर रहे थे क्योंकि योगा में कपड़े नहीं पहनने। इस आप समय में यदि सही स्टोरी भी कर रहे हैं तो वो सरकार के उनके खिलाफ है तो आपके ऊपर केस होंगे। तो पत्रकारों का काम सिर्फ आज गुणगान करना रह गया, क्या वाहवाही करें। यदि ये आप चाहते हैं तो खुल के कहें इस बात को, क्योंकि हम लोग ने जो पत्रकारिता की है या जिस पत्रकारिता के लिए हम लोग जाने जाते हैं, वो एज ए वॉचडॉग ऑफ सोसाइटी है, जो हमारा काम है। हम सोसाइटी के वॉचडॉग हैं, हम आपके लैपडॉग्स नहीं हो सकते। हम इसके लिए नहीं बने हैं। आप चाहें केसेस कर लें, जेल भेज दें, हम लोग सब तैयार हैं। आप जितने पत्रकारों को चाहें, समाज के और तबकों को भी आप जेल भेजेंगे, आप भेजिए, क्योंकि आजकल तो हर नई चीज सुनाई पड़ती है। यदि किसान अपनी बात कहने को जमा है तो वो भी देशद्रोही हो गए, वो तुरंत खालिस्तानी भी हो जाएंगे। एंटी नेशनल तो हम सब हो ही रहे हैं। तो देश को हम कहाँ चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं? तो आज जरूरत हमें इस लड़ाई को और तेज करने की, क्योंकि यदि हम जर्नलिस्ट लोग दब गए तो आप ये मानिए कि ये डेमोक्रेसी भी खत्म होने वाली है। क्योंकि उनको ये लगता है कि यदि जर्नलिस्टों को दबा लिया तो हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे, हमारे झूठ की खेती चलती रहेगी, क्योंकि शायद उनकी झूठ की पोल हम ही लोगों से खुलती है। मैं एक ही बात कहूंगा, पूरे देश में पत्रकारों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है।
और हमें समाज को भी अपने साथ रखना है, सोसाइटी को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके नंबर सबका आएगा। मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के बिहाफ पे श्रीनिवास रेड्डी, प्रेसिडेंट हमारे हैदराबाद के, उनसे ये बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। और जो हमारी ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन है, उसके बिहाफ पे आपको ये कह सकता हूँ कि इस लड़ाई को हमें आगे ले जाना है। सब लोग मिलके, आनंद जी आप लोग तय करें, और इसके लिए यदि हमें सड़क पे भी आना पड़े तो हमें आना चाहिए। यहाँ की बैठ के मीटिंग्स करके शायद हम लोग उतना असर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार को वो एक कहा जाता था, बहुत पुरानी बात है, भगत सिंह की बात है जो मैं ऑलवेज याद रखता हूँ, जब बहरी सरकारें हो जाएं तो उसके लिए धमाके करने पड़ते हैं, आवाज उठानी पड़ती है तेजी से। शांति की आवाज शायद बहुत लोगों को नहीं सुनाई पड़ती, तो हमें सड़क पे आना पड़े तो हमें आना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहती हूँ। 15 मई को प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक ट्वीट किया था, उस समय लॉकडाउन का माहौल था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और डीसीपी ईस्ट ने उन्हें कहा, उस ट्वीट पे जवाब दिया था कि ये फेक न्यूज़ है और आप इस पे यू आर स्प्रेडिंग फॉल्स एंड र्यूमरस न्यूज़ करके कुछ है। उसके बाद कुछ हुआ होगा, प्रवेश वर्मा ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, डीसीपी ईस्ट ने भी कर दिया, पर मैं आज तक वेट करती रही कि क्या उन पे कोई एक्शन लिया गया। इट्स नॉट कि यू वर्सेस अस, हम तो उस लेवल पर नहीं जा सकते, लेकिन आपकी गलतियों की अगर हम लिस्ट निकालें तो हजारों हजार आप फेक वीडियोस चलाते हैं, और जिसको अभी कॉल इट आउट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। मुझे लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। मुझे लगता है सरकार को भी थोड़ी समझ होगी कि आप हमें डराने की कोशिश मत करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। बट ये सेडिशन, UAPA ऐसे बहुत, मेरे सीनियर्स ने इससे बुरा समय देखा है, और आने वाले समय में भी बहुत सारे जर्नलिस्टों को बहुत कुछ देखना है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आप अपने मिनिस्टर्स और अपने MPs को देखिए कि वो लोग क्या ट्वीट करते हैं और वो कितना फेक ट्वीट करते हैं। दैट विल बी नाइस, एंड आई वुड लाइक टू सी पुलिस टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑल दो सच फेक ट्वीट्स। Before we end, what I would like to do is, let me on behalf of all of us here express appreciation of the young journalists in all states, not only in Delhi, who have against the most difficult odds faced up to extremely challenging circumstances. We have the case of Shri Siddiq Kappan, who has attracted the UAPA, which is an anti-terrorism law, because he wanted to go to Hathras to cover this story, that horrid story of that Dalit woman's assault. Then we have the case of Mr. Prashant Kanojia of Uttar Pradesh. He is already in on sedition. In a number of these cases, the courts have been, at the lower level, sometimes the courts do show some nerve and stand up, and the damn thing gets thrown out at higher levels. So this is certainly not the season to sing the praises of the government. It is no season to sing the praises of our judiciary either, I'm sorry to say. Then we have in Manipur, Mr. Kishore Chandra Wangplan. Okay, just leave this, please leave this for here. Then we had the case of Shri Dhaval Patel of Gujarat. He was in for sedition because the poor man, being a good political journalist, he was speculating on the strength of his conversation with senior politicians there about whether or not the CM is going to change in the current circumstances. This was only a few months ago. He is in for sedition. Shri Rahul Kulkarni, you'll recall when the COVID struck and people were running home and masses of people had gathered in Mumbai at various places. So Rahul Kulkarni, poor man, he thought he was doing his duty very sincerely and so on, and in he went
on fake news. Anyway, he came out, the courts were kind to him. So we have numerous cases, and Neha Dikshit in Delhi, courageous woman. She's been reporting very, very fairly from the time of those JNU disturbances. And then she began to get those horrid, indecent messages which women get. And then somebody tried to break into her. This was reported yesterday's newspapers, I think. So we are holding a meeting here, you know. Do remember that security does lie in numbers. But here are these people who, as individuals, summoned enough resources inside themselves to stand up, you know, to whatever the challenge that was being thrown at them by the system, by the political system as such. Bhai, kahan chala gaya wo? Anyway, Sanjay, it's all right. Shri Vinod Dua, who was himself a victim of these circumstances, has sent a message of solidarity to this meeting. So, what's happening is that one by one, it was a center of learning, which is India's #1 university, the Jawaharlal Nehru University. Then came the turn of the #2 university, the Jamia University. Both happened to be in Delhi. Right. Before that, you'll recall, in the Ramjas College of Delhi, Delhi University. Again, there was the same kind of tam-jam tamasha about a year and a half. Then there are these intellectuals and I believe even people who crack jokes. They are facing a rough time, and I'm glad to say some of them are giving a rough time to the Honorable Supreme Court also. Kunal Kamra's deposition is an absolute magnificent piece of writing, something that I would be proud to write. So people at every level, whether you're a farmer, whether you're a social activist, and those hard-working women, those Pinjara Tod women, all that they're saying is get out of this whole paternalism, feudal attitudes which are thrown at you, starting from your home, at your parents' home, and then carrying on later in life, at your workplace and in your own home. So those poor young ladies are also facing the wrath of the law and facing UAPA and NIA and God knows what else. Bail not to be offered. Bail is not an offer. So these are very unfortunate conditions of life today, and now has come the turn of those who deliver the news. Usually the news is very bad these days. So those who deliver the bad news. For the good people, God bless them, who deliver only good news, they are in a somewhat better place than we are. So we won't talk about them. And with your permission, we have crafted a short resolution after consultations here. Permit me to read that out. First of all, permit me to thank you all for being here. It's an important occasion for the community of journalists and for all the organizations involved in making this happen today. I can't thank Seema Mustafa enough, who prodded me and jogged me because I was out of town. She said, "Kahan baithe ho, jaldi aao." But little did she realize that I was fast asleep in bed when I got her messages. But she has shown real gumption here, so I thank her, I thank each one of you. And here is a resolution. And I'm glad to see that besides Rajdeep, there are others also who are, in this sorry mess today. So this is the resolution. And I hope, it will be passed with a good, strong voice vote. It is written in my bad handwriting, not typed. This meeting expresses deep disapproval of the action of governments to seek to disrupt the work of journalists to inform the people. This meeting demands that governments withdraw the criminal charges, including that of sedition, against the editors and publications made on the 28th of January 2021. And all journalists in the country in recent years. We resolve to carry out a campaign in this regard if the charges are not immediately dropped.
our struggle will be within the ambit of the Constitution. In this endeavor, we shall bring to bear all strength at our command. So this is the resolution, and we pass kara lijiye. So do we have your support for this resolution? Okay, thank you. Right to report, young journalists also reporting is not being allowed virtually. People are covering farmers, movements and various movements, they are being arrested. वो उसमें आ गया है. जगह journalists also, there are so many. Journalists. Women working night and day. Work of journalists to inform the people. ये शुरुआती जुमला है यहाँ पर. Right to Okay. perform their duties. Are there any It's not Jumla. Well said, well said. Well, the word jumla has a very innocent meaning. It only means a sentence. So, एक सवाल यहाँ पे एक सेकंड. इसमें से किसी का डिसेंट है क्या? ये डिसेंट नहीं है, ऐड करना है इसमें. हाँ. कि जो इंडिया टुडे के ग्रुप ने हाँ. राजदीप सरदेसाई को ऑफ ईयर किया और उनकी सैलरी जो कट की उसको क्रिटिसाइज किया जाए कि बिना किसी इंक्वायरी के उसमें एक मैनेजमेंट ने अच्छा एक सेकंड ने कैसे एक्शन ले लिया. ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. देखिए, ये मेरी मन की अपनी बात थी जो आप कह रहे हैं कि मैं इसका उल्लेख करना चाह रहा था. मैंने जानबूझकर नहीं किया उसका उल्लेख. उसका एकमात्र कारण ये है कि वो एक मीडिया कंपनी है ना. ये एक सरकार को एड्रेस कर रहा है ये हमारा रेजोल्यूशन. और जहाँ तक इनकी राजदीप जी की बात है, मेरा जाती तौर पे मानना है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अनेक कंपनीज, मीडिया की कंपनीज, मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर ताकि उनके लोग एम्बेरस्ड ना हो जब वो दफ्तर जाएंगे अपने, उनकी मैनेजमेंट उनको कुछ ये नहीं करे और भी ज़्यादा, कि हमारी मैनेजमेंट्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कि सरकार को बिल्कुल ये दिखलाना चाहती हैं कि वो विनम्रता पूर्वक सरकारों के सामने झुक जाए. और जो इनका केस, जिस केस का आपने अभी जिक्र किया, उसका ये मतलब है कि इनको आप पनिश करके यू आर ट्राइंग टू प्लीज द गवर्नमेंट. सिंपल एज दैट. इट इज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट. तो ये हम तो ये हम इस रेजोल्यूशन में तो नहीं कह सकते. हम ये लाइन लिख सकते हैं. हम मोस्ट डेफिनेटली हम ये लाइन लिख सकते हैं. इसमें तो नहीं लिख. नहीं, हम लिख सकते हैं इस बात को कि सरकार मीडिया हाउसेस को प्रेशराइज कर रही है, जर्नलिस्ट को. We will add that. Okay. The government is we are unhappy that the government is trying to pressurize media houses. Yes. Okay. ठीक है. सर, मेरा एक सवाल है छोटा सा. जी. अनुराग चड्ढा नाम है मेरा. मैं एक न्यूज और मीडिया चैनल में संपादक हूँ. सॉरी, मैं समझ नहीं पाया. आप बोले, सुनाई दे रहा है. मेरा नाम अनुराग चड्ढा है. जी. न्यूज और मीडिया चैनल में संपादक हूँ. हमने भी कई बार कई खबरें चलाई, हमारे ऊपर भी FIR हुई, लेकिन हमारा कंटेंट सही था. लेकिन आप इतने बड़े मंच पर बैठे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग गलत ट्वीट करते हैं, इन्फॉर्मेशन वायरल करते हैं, गलत टीवी पर चलाते हैं, तो ये उसके बाद हम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाते हैं. तो इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए. अलग इशू है. हाँ, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है भाई. ये तो पत्रकारिता का रोज का नियम है. 11 बजे सुबह में कोई बात सही लग रही है और बहुत सी घटनाएं हुई उस घटनाक्रम में, और वही चीज बाद में पलट जाती है. ये तो नहीं, बैकफुट पर रहना है. आप लोग बैटिंग करिए, छक्के मारिए, फ्रंट फुट पर जाइए, 6 लगाइए. कैमरा चलाओ, होगा देखी जाए. Okay, so thank you all very much. And I call upon my Secretary General of the Press Club, Shri Anand Bagatkar, to give a vote of thanks. So don't run away before you have a cup of tea or something like that. भाई आनंद जी, चाय के लिए कुछ है कि नहीं? You offer and then Yeah, please be seated 1 second. Hello. We are not over yet. Give us 2 minutes more. No, I will take your 2 minutes only. Thank you very much for attending this meeting, and I hope
our unity will continue, our struggle will continue, and this is a fight against a mindset. Please keep this in mind, and we will fight. If Rajdeep, you want to speak? No, Rajdeep, if you wish to come and speak, you're most welcome. Where is Rajdeep? Rajdeep, please come. Okay, friends, Rajdeep is with us. No, I was advised that those who have been proceeded against may not want to speak. That's why. No. I'm more than delighted. That's right. Bolo. Mr. Rajdeep Sardesai. I just want to say one thing. I do not want to get into the case in any form. That matter will be fought in its own way, in whichever court it has to be fought. I don't even want to get into the journalistic aspects because that can be subject to dispute. I only want to say one thing. और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ. आज के पत्रकार बट गए. कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर है, और मैं उस डिबेट में आज पढ़ूंगा ही नहीं. पर एक चीज है, and I'm very glad and I thank you all for having brought journalists together, because on sedition, whether you are a journalist in Manipur, in Kashmir, whether you are a journalist where there is a Congress ruled state or a BJP ruled state, on sedition there should be complete unanimity among every journalist. That we are discussing this law on a day when the greatest Indian went to jail on this law. The time has come for all of us to protest in one voice that sedition is an unacceptable charge against journalists. फिर आप किसी भी पक्ष के हो और वहां कोई भी, it should in my view therefore become the common minimum program of all of us as journalists here today. Let us forget everything else. That is the one thing I would plead with you. And I saw 2 weeks ago when colleagues in Manipur, who perhaps do not have this forum, have been put into jail on it. Or indeed in Kashmir, or indeed in any part of this country today. Certain cases were given by Anand. And my only request is that on that one specific issue at the moment, at least let us show some solidarity. We have all our differences. We can continuously fight with each other on numerous issues. But surely on this one very basic issue that I really feel strongly, we may make mistakes as journalists. There are enough fora for us to correct those mistakes. But to put sedition against journalists, some who are, one of the gentlest people I've ever met in my life is Zafar Agha. Mrinal Pandey, whatever else at the age of 74, 75, you're putting sedition. I do hope each of you as journalists, wherever you are, will ask your conscience and ask yourself whether those journalists are in Manipur, whether in Kashmir, or whether in Delhi, is this justified? Whether it's a BJP ruled government, a Congress ruled government, or any government. Governments abuse power. And that's the limited point I want to make today. Nothing more. Thank you very much. And I want to thank each and every one of you for having organized this and build this solidarity for journalists. Thank you. Rajdeep, thank you. Please stay seated. It's brilliant. I think our friend Shekhar Gupta, he arrived. I didn't see him earlier. He's just come. So can I ask Shekhar to have a... They have the patience to clear the time. Come on. Thank you. जरा एक मिनट बैठ जाए आप लोग प्लीज. बैठ जाइए आप लोग. बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए. I think I must be making a point that everybody has made already, so I'll be very brief. I think there are three very clear signals here. Three very clear points. Number one, that nothing that's been done by any of these people amounts to a crime under any law in India. Forget sedition. Sedition is a very serious law. That's one. Part of that is that a journalist is
entitled to make or allowed to make genuine mistakes. As long as you make genuine mistakes, even if this was an error, this does not amount to any crime, but journalists do make errors, and if they make amends, that's it. There is no criminality. Number two, why has this been done? This is a shot across the bow for all of us. This is a signal to all of the media, all over the country, that if you don't fall in line now, then you are worrying about libel and contempt and soft things like that. We can hit you with the worst laws in the country, which are cognizable, which can involve a life sentence. And we know you might think that nothing will happen in the court. Good lawyers are there, and it will take a very special kind of judge to punish a journalist for a law like this. But then the process will be your punishment, as is done with many others. And the third point, very simply, that we are all journalists. We live in the world of ideas and arguments. And these are also polarized times. So very often we argue with each other, we disagree with each other. We also call each other names. Now, while we continue to disagree, fight, argue, there are a few things that we should avoid doing. One, imputing motives is something that weakens the media. You impute motives to anybody's ideas, it weakens the media as an institution. And second, there are basic issues like freedom of expression, freedom of journalism in our case. On that, we should have unanimity, because there are too many divisions already in the media, which establishments of all kinds are there to exploit. So I think I will just stop at that, and thank you very much for coming here. I'm sorry I was late because I had another commitment. Okay, thank you, Shekhar Gupta, very much. Thanks a lot. These are really very, very, words of coming from deep years of experience, words of wisdom. Thank you. Anand? Thanks once again. And just let's stick together on these basic issues that Shekhar outlined just now, that regardless of who we are, what we are, but we serve a certain institution, we serve certain basic fundamental tenets. Just bear that in mind. Thank you very much. And thank you, Sanjay Hegde. Thank you very much.